Hi everyone. Hi, good afternoon. Okay, I can't see any comments right now क्योंकि ये एक pre-recorded session है. इस बार हम थोड़ा कुछ different कर रहे हैं. मुझे as usual join कर रहे हैं विशाल. विशाल, how are you doing today? Hi Anchal, doing good. To be honest, very good. I am not in the heat of Bombay right now, so it is good. That's good to know. आपने heat escape कर दी है और इसीलिए because you are traveling, that's why we are pre-recording this session. मैं हमारे audiences को बता देती हूँ कि अगर आपके पास कोई questions या comments हो तो please do let us know in the comment box and we will try to take it up the next time. So Vishal, what are we going to study today? Definitely, thanks Anchal. So today's topic is very interesting one. क्योंकि let me before jumping to the topic, I want to ask you something, Anchal, and the audience. Obviously, I want it to be putting out on your YouTube feed right now. कि अगर you have been with us in this journey as well for a good period of 13-14 sessions that we have done. तो ये अपने टेक्निकल एनालिसिस समझा, अपने साइकोलॉजी समझा, अपने रिस्क मैनेजमेंट समझा. अगर मैं आपको एक 100 पॉइंट देता हूं टू डिवाइड दिस 100 पॉइंट्स इनटू ट्रेडिंग सिस्टम जहां पे एंट्री और एग्जिट होनी चाहिए, साइकोलॉजी मतलब जो आपका माइंडसेट है ट्रेडर्स का, और एक मनी मैनेजमेंट या रिस्क मैनेजमेंट ले लो या पोजीशन साइजिंग ले लो. तो अगर आपको ये 100 पॉइंट्स देता हो तो हाउ डू वुड यू डिवाइड? किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दोगे, किसको कम दोगे, किसको क्या दोगे? इसका आंसर तो आपको बाद में ही मिलेगा ऑडियंसेस से. बट आई एम होपिंग कि कमेंट्स में सब लोग ये आंसर डाल लें एंड द नेक्स्ट टाइम व्हेन वी हैव यू लाइव तो आप वो आंसर कर सकते हैं. और बट Definitely. And but before moving forward, Vishal, I'm sure कि काफी interesting session है आज का भी. But शुरू करने से पहले मैं हमारे audience को as usual आपका एक छोटा सा profile दे देती हूँ. Vishal Mehta is a full-time independent trader. He is a chartered market technician from USA and co-chair for India chapter for CMT. He started as a discretionary trader. Vishal has worked with all the leading financial service providers in India and globally like Bloomberg, Thomson Reuters, Spider Software, and Reliable Software and Financial Technologies. He was featured on Money Control and e-learn market. Using his trading strategies, he has also won a 30-day challenge by one of the brokers for 7 months in a row. So Vishal, that makes you a very efficient and proficient professor. So why don't you load your presentation and let's start the session today. For sure, Anchal. So let me just, that is my cue कि efficient and proficient आ गया है, तो now I have to start. Let me just share my screen. Just let me know when you are able to see the screen now. I can see the screen. Perfect है. So long journey we have, like हम लोग ने introduction से चालू किए. What, as you rightly asked, what is the topic for today? Today I'm going to talk about risk management. Or no better time to discuss risk management than this time, because if अगर हमारे traders friends जानते हैं कि the way we are in the market right now, it is scary, to be honest. And I am right now in New York, and I am attending a conference for all technical analysis, which is CMT Symposium, and I get to meet a lot of international trader. And luckily, I will try to get a photo also where I met up with John Bollinger, who is the founder of Bollinger Bands, right? And we were discussing about markets के structures, market की study and all that stuff. And I've realized कि हम इंडिया में technical analysis use करते हैं mainly for entries and exit. लेकिन there is so much more to technical analysis than we have not explored. जैसे something called as a intermarket analysis. How does inflation impacts the interest rate? How does interest rate impacts the bond market? How does the bond market impacts the money market and the equity market and commodity cycles as well? Sorry. So technical analysis is not just not buy here, stop loss here, target this. It is also more about risk management. क्योंकि मार्केट जिस तरह अभी फंक्शन कर रहा है, there is just so much of volatility in the market.
and we don't call it as a bull market or a bear market. Now we are calling it as a kangaroo market, क्योंकि मार्केट एक दिन 800 पॉइंट नीचे है, दूसरे दिन 900 पॉइंट ऊपर है, तीसरे दिन 1000 पॉइंट नीचे है. आई एम टॉकिंग अबाउट डाउ जोन्स. सो लाइकवाइज you can see so much of volatility. The only savior for us in this kangaroo market is the risk management. और risk management और कुछ नहीं है, लेकिन how much money you can save when you are wrong and how much money you can make when you are right, and that's all about risk management. तो आई विल टॉक अबाउट रिस्क मैनेजमेंट, हम लोग डिटेल में उसके बारे में बात करेंगे. सो ये स्टेटमेंट बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है. अगर आपने आर्ट ऑफ वॉर करके एक बुक पढ़ी हुई है बाय जेंसु करके, इट्स अ चाइनीज वॉर स्ट्रेटेजिस्ट, उन्होंने एक बुक लिखी हुई है. एंड आई फर्मली बिलीव इन ट्रेडिंग. हम लोग हर रोज वॉर ही करते हैं. टू मेक मनी वी आर इन अ वॉर. सो देयर इज अ फेमस सेइंग, इन अ वॉर एवरी बैटल इज वन बिफोर इट इज फॉट. मतलब जो आप प्रिपरेशन करते हो वॉर के पहले की विल डिसाइड व्हाट विल हैपन इन द वॉर. क्योंकि वॉर को आप खाली ऐसे लाइटली नहीं ले सकते हो, आप सीधा जाके लड़ाई नहीं कर सकते हो. देयर हैज टू बी सो मेनी प्रिपरेशन, सो मच दैट गोज इनटू प्रिपरेशन. आपको इतनी मेहनत करनी पड़ती है स्ट्रेटेजी बनाने के लिए. अगर आपकी स्ट्रेटेजी नहीं चली तो आपका रिस्क मैनेजमेंट क्या है. अगर आपको फॉल बैक करना है तो क्या हुआ, आप अगर वहां से एस्केप करना है तो क्या, अगर आपकी विक्ट्री हो गई तो क्या. मतलब फॉर एवरी स्टेप यू हैव टू हैव अ फॉलो अप स्टेप. जब भी आप पूरा का पूरा प्लान करते हो तो देर इज अ वेरी हाई चांसेस दैट यू विल विन द वॉर. एंड दैट्स व्हाट जेंसु मेंशन, एवरी बैटल इज वन बिफोर इट इज फॉट. सिमिलरली इन ट्रेडिंग में प्लान द ट्रेड, ट्रेड द प्लान. मीन्स अगर आप एक ट्रेड जाने से पहले उसके पहले की जो भी नेसेसिटी रिक्वायरमेंट है, आप उसकी पहले की जो भी स्ट्रेटेजीज है वो पहले आप डिसाइड कर लो. एंड देन वंस यू आर इन द ट्रेड यू एग्जीक्यूट द प्लान दैट यू क्रिएटेड बिफोर पुटिंग ऑन द ट्रेड. क्योंकि हम लोग है ना डायरेक्टली ट्रेड ट्रेड, ना तो हम लोग प्लान द ट्रेड करते और ना तो वी ट्रेड द प्लान. वी जस्ट डू ट्रेड एंड गेट आउट. एंड दैट्स व्हाई लॉट ऑफ ट्रेडर्स जो नुकसान होता है क्यों होता है, बिकॉज हमको एक्साइटमेंट चाहिए. हमको यू नो वी वांट टू मेक मनी. आई एम नॉट डिनाइंग वी डोंट वांट टू मेक मनी, लेकिन वो मनी मेकिंग मनी एलिमेंट ऑल ऑफ अ सडन goes out of the window once you are in the trade. Okay, it is more of greed and fear that keeps on dominating the cycle. लेकिन अगर आपने एक ट्रेड को प्लान किया हो और आपने परफेक्ट रिस्क मैनेजमेंट के साथ किया होगा, that will give you money. So what is risk management? Risk management is nothing but the way you safeguard yourself from the adversity. मतलब अगर कोई चीज आपकी अगेंस्ट गई तो आपको क्या करना है, that is risk management. I'm going to repeat this one more time. Risk management is the cornerstone of your trading. Okay, बहुत सारे लोगों को लगता है कि एंट्री और एग्जिट, इनडायरेक्टली आई एम गिविंग एन आंसर टू द क्वेश्चन दैट आई आस्क्ड इन द बिगिनिंग. लेकिन बहुत सारे लोगों को लगता है कि एंट्री और एग्जिट इज द होली ग्रेल. इफ यू आस्क मी ऑनेस्टली, एंट्रीज एंड एग्जिट जस्ट हैज टू बी प्रॉफिटेबल. ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं जरूरत है, लेकिन हम लोग पूरा अपना टाइम कहाँ डाल देते हैं, हमारा पूरा टाइम चला जाता है एंट्री परफेक्ट 80% एंट्री एक्यूरेसी सिस्टम पे. ओके, 80% 90% एक्यूरेसी सिस्टम चाहिए, विच इज वेरी रेयर टू फाइंड. बट वी फॉरगेट कि एक्यूरेसी इज वन पार्ट ऑफ इट. The most important part of trading is the risk management. And why I say that is very important because समझ लो कि आपने एक्यूरेट होने के चक्कर में आपने 10 ट्रेड में से 8 ट्रेड एक रुपए पे बुक कर लिया. बाकी के 2 ट्रेड ओके आपने 5 रुपए का स्टॉप लॉस रखा हुआ था और वहां पे गया. यहां पे आप 80% की एक्यूरेसी पे 8 रुपए तो बना लिए, 8 पॉइंट्स बना लिए. लेकिन जो तो 2 ट्रेड आपके गलत गए 5 पॉइंट वाले, यू हैव एक्चुअली लॉस्ट 10 पॉइंट्स and effectively you have lost 2 points. That is the problem.
बिकॉज हम लोग हमेशा फोकस रखते हैं अपनी विनिंग एक्यूरेसी पे, क्योंकि वो हमारे बचपन से हमको सिखाया गया है कि अगर आप राइट रहोगे अपनी लाइफ में तो ज्यादा पैसा बनाओगे। ट्रेडिंग उसका पूरा उल्टा है। ट्रेडिंग में आप गलत ज्यादा होके भी पैसा बना सकते हो। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर मैं 6 बार लॉस मेकिंग हूं, लेकिन 6 बार मेरे को लॉस हुआ तो मेरा 1-1 पॉइंट का लॉस हुआ, ठीक है। और 4 बार मैं राइट हुआ और मैंने 2 पॉइंट का प्रॉफिट किया, तो आई विल स्टिल एंड अप मेकिंग 2 points. Even though I am more wrong than right, I still end up making money. That's the power of risk management, and that is the most crucial aspect that lot of people miss out. बहुत सारे लोग ये पॉइंट को मिस आउट कर जाते हैं। वो लोग को एंट्री और एग्जिट में ही ज्यादातर टाइम चला जाता है, विच इज नॉट द करेक्ट वे। रिस्क मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो एक क्वेश्चन आएगा, व्हाट तो समझ लिया, लेकिन व्हाई? एवरीबडी इज प्रिपेयर्ड टिल दे गेट पंच इन देयर माउथ। मैं वापस एक बार हिंदी में रिपीट करता हूं कि एवरीबडी इज प्रिपेयर्ड, सब लोग तैयार है बॉक्सिंग के रिंग में जाते हैं, सबके पास प्लान है, एवरीबडी हैज अ प्लान कि सामने माइक टाइसन अगर आया तो मैं उसको ऐसे पंच मारूंगा, ऐसे पंच मारूंगा, वैसे पंच मारूंगा। लेकिन जैसे ही अपने को एक पंच पड़ता है, सब स्ट्रेटेजी आउट ऑफ द विंडो चली जाती है। तो सिमिलरली आप प्लान तो करके घुस गए, लेकिन अगर आपको एक पंच पड़ा, एक लॉस हुआ, तो साइकोलॉजी पूरी हिल जाती है, एंड देन यू गो आउट ऑफ द ट्यून। एंड दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसने जो स्टेटमेंट लिखा था ना, प्लान द ट्रेड एंड ट्रेड द प्लान, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एज अ ट्रेडर हम लोग को रखना है। सो रिस्क मैनेजमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर योर सर्वाइवल। अगर आप सर्वाइव कर गए तो पैसा बन जाएगा। एंड आई कीप टेक दिस एग्जांपल। One of my friend told me, and who runs a brokerage business as well, and he said 90% of the new traders lose 90% of their capital in the first 90 days. Just imagine कितना powerful statement है। 90% of the trader lose 90% of their capital in the first 90 days. So अगर मुझे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे क्या करनी है, पहले तो पैसे तोड़ने नहीं है। अगर मैंने पैसे का नुकसान नहीं किया, मैंने तोड़े नहीं, या नॉट बैंकरप्टेड माय, आई ब्लू आउट माय कैपिटल, देयर इज अ वेरी हाई चांस दैट आई विल स्टार्ट शिफ्टिंग टुवर्ड्स द 10% ट्रेडर्स। एंड आई एम नॉट सेइंग 10% में आगे मतलब आप फिनोमिनल। रियल मनी इज मेड बाय ओनली टॉप 3% to 5% ऑफ द ट्रेडर, बाकी ब्रेक इवन प्लस होते हैं, ठीक है। So that's why the risk management is the most important aspect, and I cannot re-emphasize more. So रिस्क मैनेजमेंट समझ तो लिया क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या होता है, लेकिन उसका प्रोसेस क्या है? हाउ डू आई गो अबाउट इंप्लीमेंटिंग रिस्क मैनेजमेंट इन माय स्ट्रेटेजीज? सिंपल सी चीज है, पहले तो डिफाइन करना है कि भाई रिस्क है कि नहीं है। नाउ इफ आई एम बाइंग एन ऑप्शन, माय मैक्सिमम रिस्क इज द ऑप्शन प्रीमियम, दैट्स माय रिस्क, राइट? लेकिन अगर मैं फ्यूचर खरीद रहा हूं तो ऑब्वियसली देयर इज मच लार्जर रिस्क। अगर मैं शॉर्ट कर रहा हूं तो मेरा अनलिमिटेड रिस्क हो गया। वंस यू आइडेंटिफाई द रिस्क, आई विल असेस कि कितनी मैग्नीट्यूड का रिस्क है, अगर एंड व्हाट इज द रिस्क दैट आई एम रेडी टू टेक। और once I know how much risk is this, I have to control the risk. And what do I mean by controlling the risk? Having a risk does not mean that is comfortable for me. I need to bring it to my level जहां पे मैं खुद comfortable हूं। And I'll talk about it. How do you control it? By various means. You can do hedging, you can do options, you can do so many other stuff to control the risk. And then रिस्क डालने के बाद इमीडिएटली खत्म हो जाता है, ऐसा नहीं है, बिकॉज मार्केट इज डायनामिक, वो चेंज होते रहता है। एंड दैट्स व्हाई यू हैव टू कीप ऑन रिव्यूइंग कि भाई जो मैंने डिसाइड किया था कि ये मेरा रिस्क है, वो रिस्क पैरामीटर में बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। अगर नहीं बैठ रहा है, देन यू हैव टू थिंक द अदर वे अराउंड। सो व्हाट आर दी टू मेजर टाइप्स ऑफ रिस्क? Most of the traders that when they learn, they talk about, or the books, they talk about this risk, which is monetary, पैसे का risk, and which is very important. अगर ये नहीं है तो फिर थोड़ा problem है। Monetary risk is the one which gives you money or takes money from you. लेकिन even there is one more risk that is called emotional risk.
एंड यू विल टेंड टू डू, आप बहुत सारे गलत डिसीजन लोगे जब भी आपका ये इमोशनल रिस्क बैलेंस में नहीं है, एंड दैट विल ऑल्सो इम्पैक्ट योर मॉनेटरी रिस्क। अगर आपका इमोशनल रिस्क कंट्रोल में नहीं है, देन यू विल स्टार्ट इम्पैक्टिंग दी मॉनेटरी रिस्क। आपके ट्रेड्स गलत हो रहे हैं, आपकी बहुत सारी चीजें ऐसी होगी विच विल गो अगेंस्ट यू। So that's why we are going to talk about monetary risk and the emotional risk. So what is a monetary risk? Let's take an example. This was an example of what we took in the alligator as an example. If you remember, fractal और उन लोग का हम लोग ने example लिया था। हम लोग ने बोला था जब भी वो last 5 fractals का lowest low break करता है, you go and start buying the option. So what we see that entry triggered at 115 and your stop loss was at say 80 rupees. Now once I have this information, मुझे मेरा रिस्क मैनेज करना है, मतलब मेरे पास कितना कैपिटल है, वो कैपिटल का कितना परसेंटेज आई एम रेडी टू अलोकेट टू दिस ट्रेड। बिकॉज इफ आई एम गोइंग टू पुट एवरीथिंग इन वन ट्रेड, मैं सब अपना पूरा कैपिटल एक ट्रेड में ही डाल दूं और समझ लो वो स्टॉप लॉस हो गया, व्हाट विल हैपन, मेरा पूरा कैपिटल उड़ जाएगा। एंड दैट्स व्हाई इट इज बेटर टू मैनेज योर कैपिटल। ठीक है, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। assuming I have 10 lakh rupees in my account। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि मैं 10 पोजीशन से ज्यादा नहीं लूंगा, बिकॉज आई हैव सीन मेनी ट्रेडर्स दे विल हैव 20 30 40 50 पोजीशंस। एंड ऑनेस्टली मुझे नहीं पता वो लोग अपनी रिस्क मैनेजमेंट कैसे करते हैं। दे जस्ट बिलीव कि मेरी 40-50 पोजीशन से तो कोई ना कोई मेरे को बचाने आ जाएगा। लेकिन अ गुड ट्रेडर would not have more than 10 तो बहुत ज्यादा हो गई, मतलब यूजुअली तो ब्रिलियंट ट्रेडर्स वुड हैव ओनली 4 to 5 पोजीशंस, बट लेट्स अंडरस्टैंड कि हम लोग एक एवरेज ट्रेडर है, सो मैक्सिमम आई कैन हैव अ 10 पोजीशन। अगर मैं 10% ऑफ माय कैपिटल डिप्लॉय डालता हूँ 10 लाख का, विच इज इंडिविजुअली पोजीशन पे, आई कैन पुट 1 लाख रुपी। नाउ आई नो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी दैट आई कैन पुट, दैट डज नॉट मीन दैट इज माई रिस्क, दैट इज माई कैपिटल अलोकेशन। मैंने 10 लाख में से 1 लाख ये ट्रेड को दिया। नाउ आई एम कमिंग टू द नंबर ऑफ क्वांटिटी, नंबर ऑफ पोजीशन साइजिंग। मैंने देखा कि मेरा 115 में एंट्री है और 80 रुपीज मेरी स्टॉप लॉस है। दैट मीन्स इफ आई एम गोइंग टू गो रॉन्ग, आई एम गोइंग टू लूज 35 पॉइंट्स इन द ऑप्शन ट्रेड। दैट्स इफेक्टिवली 875 रुपीज। और ये 875 कैसे आया? बेसिकली 35 पॉइंट्स का मेरा रिस्क है और 25 का एक लॉट साइज है। 1 लॉट इज इक्वल टू 25 शेयर्स इन द बैंक निफ्टी। दैट्स 875 इज माय एक्सेप्टेंस ऑफ रिस्क। रिमेंबर मैंने 10% ऑफ माय कैपिटल डाला था मेरे ओरिजिनल कैपिटल पे, बट दैट डज नॉट मीन दैट इज माय रिस्क। माय रिस्क इज ओनली 1% ऑफ द टोटल कैपिटल। मतलब 10 लाख का मेरा खाली 1% मेरे को रिस्क करना है। And when I'm going to put 1% of my risk of total capital divided by the acceptance of risk, 10,000, basically 1% of the capital, 10 लाख का 1% हो गया मेरा 10,000 और 875, so I will have to buy 11 lots। ठीक है, और 11 lots into 115 will give me whatever the amount। अगर वो ज्यादा है कैपिटल से 1 लाख से, तो I have to reduce my position size, I have to reduce my lot sizes। But any given point of time, अगर ये मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है, ओके अगर ये मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है, मैंने 115 पे 80 लिया, आई विल नॉट लूज देन 10,000, ग्रेटर देन 10,000 रुपीज। मेरा रिस्क 10,000 रुपया ही रहेगा, विच इज वेरी कंफर्टेबल एज अ ट्रेडर। इफ आई एम रिस्किंग ओनली 1% ऑफ माई कैपिटल, ऑफ माई टोटल कैपिटल, मार्केट हैज टू प्रूव मी सो मेनी टाइम्स रॉन्ग। मार्केट को मुझे हर ट्रेड पे रॉन्ग करना पड़ेगा just to take out my this 10 lakh rupees। And remember that I told you 90% of the trader lose 90% of their capital in the first 90 days। what I'm trying to do is not giving a chance to the market to take out my 90% of the capital। मैं अगर 1% करूंगा तो शायद मुझे इतना प्रॉफिट ना भी बने, लेकिन the more I will start trading it, I will refine my system, I will be more comfortable with the system। So depending on your risk appetite, there are people who can take 2%, there are people who can take 3% of the risk capital।
depending on your style and aggressiveness. But a new trader should start with 1%. An experienced trader can go up to 3%. That's pretty much about it. If you start risking 5, 6, 7%, and what kind of a strategy आप कौन से टाइप की strategy run करते हो, there could be period you will have say loss of 10 or 12 consecutive losses. And assuming अगर आप 5% रिस्क लेते थे और आप ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजी यूज करते थे जहां पे 10 consecutive losses is very normal, you would have wiped out your 50% of your capital. So that's why it is very important as a trader to start small. Okay. And I read this article, very interesting quote given by the US Navy SEAL. Slow is smooth and smooth is fast. I'm going to repeat this quote because it is so powerful statement. Slow is smooth. अगर आप कोई चीज स्लोली कर रहे हो तो आप शायद उसको स्मूथली करोगे, और जैसे ही आप वो स्मूथ हो जाएगी, it will automatically become fast. So always remember, don't be in hurry to increase your capital or your risk. ट्विटर पे सबके M2M स्क्रीनशॉट देख के आप बहुत ज्यादा फैंसी नहीं होते हो. एंड आई एम श्योर जब भी आप ये वीडियो सुन रहे हो, लास्ट 3 दिन में या 1 महीने में बहुत सारे स्क्रीनशॉट कम हो गए. क्यों? क्योंकि पैसे नहीं बन रहे, पैसे टूट रहे. तो रिमेंबर, स्लो इज स्मूथ, स्मूथ इज फास्ट. ओके, यहाँ पे आप बहुत सारे वेरिएशंस ला सकते हो आपकी रिस्क मैनेजमेंट में. प्रॉफिट टेकिंग, हम लोग ने स्टॉप लॉस तो बोल दिया कि भाई मेरा स्टॉप लॉस 80 पॉइंट्स पे था, बट वेयर डू आई बुक माय प्रॉफिट्स? नाउ दिस इज, आई वुड नॉट कॉल इट एज अ पार्ट ऑफ अ रिस्क मैनेजमेंट. योर इनिशियल स्टॉप लॉस एंड एवरीथिंग इज योर रिस्क मैनेजमेंट. दिस बिकम्स द पार्ट ऑफ योर ट्रेड मैनेजमेंट. यहाँ पे आपने क्या किया, 1:1 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है. मतलब पहला आपका 35% का 35 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था. जैसे ही वो रीच होता है तो बुक हाफ और 30% ऑफ योर क्वांटिटी. दिस कुड बी 50% ऑल्सो. इट डिपेंड्स ऑन योर स्टाइल. इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन योर स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग कि आपने थोड़ा बुक कर लिया, सो यू आर नाउ कंफर्टेबल. व्हाट यू कैन ऑल्सो डू इज ब्रिंग द स्टॉप लॉस विच वाज एट 80 टू योर ब्रेक इवन. दूसरा आप क्या कर सकते हो कि जैसे ही वो 1.5 बना, यू बुक अनदर 40 क्वांटिटी, 40% ऑफ योर क्वांटिटी. अगर आपने समझ लो 10 लॉट लिए थे तो आपने 130 पे जैसे ही पहुंचा वो 35 पॉइंट्स पे, तो 3 लॉट बेच दिए. फिर सॉरी, इट जस्ट कीप्स जंपिंग. ओके, जैसे ही आपका और 52 पॉइंट्स हो गया, 1.5 टाइम्स जो इनिशियल रिस्क, आपने और 4 लॉट बेच दिए. सिमिलरली आपने 1:2 आपका रिस्क टू रिवॉर्ड 70 पॉइंट हो गया, तो आपने और 30 पॉइंट कर ली, या फिर आप ट्रेल कर सकते हो. दिस वे you are locking in your profits and not let a winning trade turn into a loser, which is more comfortable psychologically. But if you ask me very honestly, in the long run we have seen, अगर आप एक ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हो, ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजी, आई एम वेरी क्लियर, you should not have targets. But if you are using a mean reversion strategy, you should have a target. But trend following में अगर आप टारगेट रखोगे तो you will be a loser, net loser in the long run. बट अगर आपको कोई कंफर्टेबल और कोई नई स्ट्रेटेजी पे चाहिए और आपको पैसा जल्दा नहीं तोड़ना है, तो यू कैन स्टार्ट बुकिंग पार्शियल प्रॉफिट्स एंड गेट योर इक्विटी को स्मूथ. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इमोशनल रिस्क. बिगिनर्स फील्स एक्साइटेड व्हाइल प्लेसिंग द ऑर्डर. बॉस, मतलब आई हैव बीन इन द मार्केट सो मेनी टाइम्स. ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स व्हेन दे स्टार्ट. जो नए हैं, एकदम नए हैं, या फिर दे आर लाइक वेरी स्कैरी, वो लोग डर जाते हैं, या तो फिर कोई आता है वो एक्साइटमेंट के लिए आता है. एंड आई always believe that trading should be boring. Long hours spent reading the price action and calculating risk and the maintaining journal. ये चीज हमेशा याद रखना. मैंने एक बुक पढ़ी थी, मार्केट विजार्ड बाय जैक श्वेगर, और उन्होंने एक बहुत अच्छा सा एक चैप्टर है उसके अंदर, कॉलेज I forgot the name, everybody gets what they want from the market by एडवर्ड साइकोटा. सो मुझे बहुत क्यूरियस लगा जब भी उसने वो जो हेडिंग रखा था, एवरीबडी गेट्स व्हाट दे वांट फ्रॉम द मार्केट. तो मैंने वो बुक पढ़ना चालू किया. वो टिपिकल उनका इंटरव्यू था एडवर्ड साइकोटा का.
एंड जैक शुगर उनको क्वेश्चन पूछता है कुछ रिलेटेड टू द मार्केट एंड ही सेड एडवर्ड साइकोटा सेज एवरीबॉडी गेट्स व्हाट दे वांट फ्रॉम द मार्केट। और वो स्टेटमेंट इवन जैक शुगर को बहुत अलग लगा, क्योंकि बिलीव इट और नॉट एवरी वन ऑफ अस इज हियर टू मेक मनी इन द मार्केट। अगर कोई और चीज के लिए है तो यू विल गेट दैट, बट मोस्ट ऑफ अस आर हियर फॉर मेकिंग मनी। तो जैक श्वेगर आस्क्ड एडवर्ड साइकोटा कि आई डोंट गेट योर पॉइंट, मैं समझ नहीं पा रहा हूं आप क्या बोल रहे हो, क्योंकि हम लोग सब पैसे बनाने आ रहे हैं। लेकिन तभी एडवर्ड साइकोटा ने एक बहुत सही चीज बताई कि नो, नॉट एवरीवन इज हियर फॉर मेकिंग मनी। देयर आर पीपल, देयर आर ट्रेडर्स, कुछ ट्रेडर ऐसे भी है जो यहाँ पे एक्साइटमेंट के लिए आते हैं। कैन यू सी दिस गाय हु इज लाइक वेरी हैप्पी। एंड जैक श्वेगर पूछ लेता है कि सर नो, आई डोंट थिंक सो, इट इज ट्रू, इट इज रॉन्ग, पीपल आर नॉट हियर फॉर एक्साइटमेंट। एंड ही सेज कि आई नो अ गाय, नॉट लाइक कि या फिर दे आर सैड पीपल, सो देयर इज दिस गाय आल्सो इज वेरी सैड। सो उसने एक एग्जांपल दिया अपनी ट्रेडर का कि एक बंदा है मेरी ट्रेडिंग रूम में, इज अ ब्रिलियंट ट्रेडर। वो पहले 20 दिन पैसा बनाता है और बहुत अच्छा पैसा बनाते हैं, लेकिन लास्ट 10 दिन के अंदर ही विल स्टार्ट लूजिंग ऑल। ओके, वो जितना भी पैसा उसने 20 दिन में बनाया वो 10 दिन में उड़ा देता है और शायद नेगेटिव भी हो जाता है। और फिर वो लोगों को जाके बोलता है, सिंपैथी लेता है। somehow he was there to take sympathy from the market, not to make money। वो 20 दिन अपने रूल बराबर डिलीजेंटली फॉलो करेगा, लेकिन जैसे ही थोड़े दिन निकल जाएगा उसके पास प्रॉफिट आ जाएगा, ही विल डू रेकलेस ट्रेडिंग। ही विल मूव, ही विल जहां पे स्टॉप लॉस डालना है वहां नहीं डालेगा, लेकिन पहले 20 दिन वो डिलीजेंटली ट्रेड करता था। सिमिलरली आई नो समवन पर्सनली कि हु हैज लॉट ऑफ मनी, हु डजंट रिक्वायर टू ट्रेड, बट ही इज फ्री राइट नाउ। उनके पास पैसे इतने कि और कुछ करने को है नहीं, सो दे कम टू द मार्केट फॉर एक्साइटमेंट। ओके, एंड दे विल गेट एक्साइटमेंट। जैसे ही उन्होंने शेयर ले लिया और थोड़ा भी बढ़ गया तो सबको जाके बोलेंगे, बोला था ना, मैंने बोला था .com हो जाएगा, लाइक मैंने बोला था ये ऊपर चला जाएगा। एंड ही विल कीप ऑन फ्लैम्बॉयंटली टॉक अबाउट इट, बट ही डिड नॉट वाज देयर फॉर मेकिंग मनी। वो एक्साइटमेंट के लिए था, तो ही विल गेट एक्साइटमेंट। सबको ये इमोशनल रिस्क को बहुत कंट्रोल में रखना है। काउंटिंग मनी इन ओपन ट्रेड्स, और ये जो एग्जांपल है ना, और किसी का नहीं, मेरा खुद का है। व्हेन आई स्टार्टेड आउट, सो आई रिमेंबर young guy 2002, so it's all 20 years now, it's long year that I've started trading. Okay, so मैंने यूको बैंक में अच्छी खासी पोजीशन बनाई थी, कुछ 10,000 लॉट की, 10,000 शेयर की, तभी लिस्ट हुआ था यूको बैंक। और मेरे पास ज्यादा पैसे भी नहीं थे, 6-7 लाख रुपए थे तभी, जब भी मैं स्टार्ट कर रहा था तभी। तो मैंने 10,000 यूको बैंक उठा लिए 20 रुपए में, 2 लाख रुपए, फिर भी 5 लाख के अकाउंट पे 2 लाख इज ऑलमोस्ट अराउंड 40-45%। और यूको बैंक में 20 वाला 30 रुपए हो गया। तो मेरे सब कॉलीग्स ने बोलना चालू कर दिया, भाई तू 2 लाख रुपए पे 1 लाख रुपए बना रहा है, बहुत अच्छा है, 50% ना तेरा रिटर्न है, व्हाई डोंट यू बुक इट। और मैंने बोला नहीं नहीं, इसका तो भाव 60-70-80 हो जाएगा, मेरे को तो टॉप एंड मारुति कार लेनी, तभी तो मारुति कार वॉज वेरी फेमस। सो मेरे को तो एकदम टॉप एंड कार लेनी है। नाउ द फनी थिंग इज वाज देयर वाज अ ओपन ट्रेड and I started relating my open trade profits to the things that I can buy with it, and that जब भी प्राइसेस नीचे आना चालू हुआ तो मैंने कभी भी स्टॉप लॉस डालने की जरूरत ही नहीं सोची, क्योंकि मुझे लगा था मार्केट वापस ऊपर चला जाएगा, या फिर आई स्टार्टेड अटैचिंग माई सेल्फ टू दिस थिंग्स विच इज डेंजरस। सो अनदर रिस्क दैट यू विल एनकाउंटर व्हेन यू आर ट्रेडिंग, काउंटिंग मनी इन एन ओपन ट्रेड। मतलब मेरे पास एग्जाम्पल आफ्टर एग्जाम्पल है जहां पे लोग बड़ी बड़ी पोजीशन लेके बैठे हुए हैं और उनकी फेवर में मार्केट जाने वाला है नेक्स्ट दिन, और वो लोग सो नहीं पाते एक्साइटमेंट में। एग्रीड, इट इज मैं भी रहूंगा तो मुझे भी एक्साइटमेंट होगा, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्रोफेशनल ट्रेडर्स विल स्टार्ट रिड्यूसिंग डाउन दैट एक्साइटमेंट और कनेक्टिंग टू दी अदर
material things till the trade is open. बाद में आप पैसा बना लो, बाद में जो करना है करो. Third one, beginners gets worked up about his or her wins or losses in a single trade. Vishal, before you continue, I have to ask, आपने वो कार Yes. खरीदी finally फिर? No, so after बाद मैंने कार ही नहीं खरीदी. So just jokes about, but no, I don't. I still believe that the car. So I'm a firm believer of a philosophy of called as rich dad poor dad, and rich dad poor dad says that your house and your car are the biggest liability that you have it. Unfortunately, because of the family pressure, I bought the house, but the car I still don't own it because they are the white elephant. In fact, I'm a good Jew. I put out my parking lot onto the rent and make money out of it, which I can use to roam around. So yeah, beginners get worked up about his or her wins on losing a single trade, while professionals analyze the entire month of or week's trading. And this is a very important point that I really wanted to kind of bring along. इस जो भी नए ट्रेडर्स होते हैं ना, मतलब दे आर हियर, मतलब वो एक एक ट्रेड पे देखते हैं कि आज पैसा बना कि नहीं बना, आज पैसा बना कि नहीं बना, आज पैसा बना कि नहीं बना. And when I attended a workshop by a guy called Madan Kumar, and I highly encourage any one of you who are interested to understand the psychology, and I'm sure we're going to have a session on psychology next week. वहाँ पे I'm going to talk about something called as law of large numbers. Okay, and he completely changed my perspective about how professional traders should think, not on a single trade, but you have to think in terms of weekly, not even weekly, monthly and quarterly performance, and that will give you a good idea. और आपका जो इमोशनल रिस्क है कंट्रोल में रहेगा. Taking profits early and waiting for losses to get even. Okay, always remember this. ये जो वाला statement है, waiting for losses to get even, I cannot give emphasize, but I have a very close relative, like kind of a family member, who lives and dies by this, waiting for losses to get even. What does that mean? मतलब इन द हिस्ट्री उनके साथ इतनी बार ऐसा हुआ है, उन्होंने लिया स्टॉक, प्राइजेस नीचे गए तो बोला कि नहीं मैं स्टॉप लॉस नहीं लूंगा, एंड मार्केट अगेन कम्स बैक एंड दे मेक प्रॉफिट. Okay, when they make profit, they book the profit and they call me up and tells me कि विशाल तू तो बोल रहा था ना स्टॉप लॉस डालना है, लेकिन देख मैंने स्टॉप लॉस नहीं डाला, आई गेट आउट एट प्रॉफिट. वापिस एक बार हुआ, बोला स्टॉक ले लिया, नीचे गया, वापिस रिकवरी आया, and then sold it at a profit. I told him get out and he said no, वापिस ऊपर, and then it became habit to him. He said कि boss, the best strategy is not to put a stop loss. And remember this, and this is a very powerful statement that you really want to write it down in front of you. Every big losses was once a very small loss that you refused to take. मैं वापस एक बार रिपीट करता हूँ. Every big loss in your portfolio, अगर आप अपने पोर्टफोलियो में जाके देखोगे, and I'm 110% sure you will have a big loss waiting in your portfolio. I don't want to name Paytm, Nykaa, Zomato, name it or whatever. And these are the examples which I told that related to get out of it, but he could not. Now, every big loss was once a very small loss that you refused to take. That's the important part, and I always remember that. And we want to book profits early, but no, the professional traders actually does the opposite. They take their losses very early, but they let their winners run. So that's the most important thing. So after ये सब कर लिया, हम लोग ने अभी इमोशनल रिस्क समझ लिया, हम लोग ने मॉनेटरी रिस्क भी समझ लिया. We will go into the risk assessment. So after calculating all the monetary risks, the risk is acceptable. अपने यहाँ पे लग रहा है कि हाँ भाई हम लोग कर सकते हैं, तो ट्रेड ले लिया. अगर
आप जब भी ट्रेड ले रहे हो, मुझे ये हमेशा आता है कि सर आरबीआई का अनाउंसमेंट है, एफओएमसी की मीटिंग है, फेड की मीटिंग है, व्हाट शुड आई डू? इफ यू आर अ डिस्क्रिशनरी ट्रेडर एंड द वॉलेटिलिटी इज नॉट कंफर्टेबल फॉर यू, डोंट ट्रेड इट. बट इफ यू आर अ सिस्टमैटिक ट्रेडर, नो मैटर व्हाट, यू हैव टू ट्रेड इट. और उसके रीजन है दैट आई विल एक्सप्लेन इन दी अदर सेशंस एज वेल. बट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज, अगर आप एक वॉलेटाइल एनवायरनमेंट में और अगर आपका रिस्क कंट्रोल में है, देन यू शुड एबल टू टेक दैट ट्रेड. बिकॉज ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, स्टॉप लॉस हिट होगा. एनीवेज अपने स्टॉप लॉस तो हिट होते ही है. जस्ट हैविंग वॉलेटिलिटी डज नॉट मीन यू विल स्टॉप ट्रेडिंग, वरना तो आप कभी ट्रेड ही नहीं कर पाओगे. बिकॉज देर इज अर्लियर देर वॉज सब प्राइम क्राइसिस, देन देर वॉज कोविड, देन देर वॉज रशिया यूक्रेन वॉर, देन देर इज इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, फेड मार्केट, so much is there is always a news. अगर आप वो हिसाब से करोगे तो गाड़ी कभी बाहर ही निकाल नहीं पाओगे. So you have to take risk, acceptable risk, controlling your risk, yes, trading your plan, that's what we talked about it. Actual system में stop loss रखना है. Yeah, there is a big debate in the world कि stop loss कभी भी system में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि stop loss, मेरा stop loss hit होता है और फिर ऊपर चला जाता है. क्यों भाई? मार्केट आपको, मार्केट, आर वी अ सेलिब्रिटी और आर दे एबल टू सी आवर स्टॉप लॉसेस? द आंसर इज नो. मार्केट इज जस्ट डूइंग इट्स स्टफ विच इज टू मूव. अगर आपने गलत जगह पे स्टॉप लॉस रखा हुआ है तो वो स्टॉप लॉस हिट होना है. और अगर आपका सही जगह पे स्टॉप लॉस और ट्रिगर भी हो गया और उसके बाद भी मार्केट रिकवर हो गया तो दैट्स ओके. दैट्स अ पार्ट ऑफ डूइंग अ बिजनेस, दैट्स द कॉस्ट ऑफ डूइंग अ बिजनेस, राइट? एंड मेंटल स्टॉप में क्या होता है कि हाँ भाई, अभी I'll give you a simple example of myself also. मैंने जब स्टार्टिंग किया था कि मैं स्टॉप लॉस डालता नहीं था. When I started out, I did not used to put a actual stop loss in the system. When the prices starts coming down, I said okay, well, let it come back and then I'll put it out. And then one fine day I had to travel outside and the stock was down by 10%, way below my stop loss. So then obviously my mental psychology told me कि विशाल इतना नीचे है तो don't, no point of selling it right now. Next day, bad news came in for the company. It went down 20% more. Okay, 30% erosion. After a point of time, I gave up on that stock. वो मेरे portfolio में पड़ा रहा. The thing is, once you don't have a mental stop loss, once you don't have a physical stop loss in the system, there is very high chance that it will turn out to be a very big loser. So remember that. By booking profits as planned to reduce the overall risk, that's good. You really want to take some profit out of the table, make sure that you are comfortable. I'm not a big propounder of booking profits, but yeah, if it helps you, very good. Trailing the stop loss to mitigate any sharp movement in the market, जो जैसे आप profit कर रहे हो और all of a sudden कोई बड़ा spike आ गया, these are all psychologically and also controlling the emotional risk for you. More importantly, diversify, and this is the real way of risk management. मतलब we not only run one strategy, we run about 8 strategies, different like a different mindset. One is mean reversion, one is trend following, one is volatility breakout, one is theta decay play. So when you have a different kind of strategies, there is a very high chance that you will make money. Like right now in this current scenario, जितने भी option seller strategy है, everybody is going through a bad phase. But there is an intraday mean reversion strategy that I'm going to teach you in a few of these sessions now going forward, where every day I come and short the market. Okay, obviously there are rules. It is making phenomenal money. There was a time in November 2020 and December 2020, I remember it very clearly. This intraday mean reversion strategy had a massive drawdown, but the option strategies were making a lot of money. So now when you have a different kinds of strategies, they negate each other. वो जो drawdown में they negate each other and gives you alpha. There will be a question in your mind कि अगर यहाँ पे profit हो रहा है, यहाँ पे loss हो रहा है, तो मैं पैसे कैसे बनाऊंगा? ऐसा नहीं होता है. अगर कोई strategy profitable है in the long run, they are trying to reduce your drawdown. मतलब ये अगर strategy का drawdown चल रहा है, इससे intraday mean reversion का drawdown चल रहा है और option पैसा बना रहा है, तो आपका जो लॉस हो रहा है डे टू डे का M2M जो फ्लक्चुएट हो रहा है वो थोड़ा कम हो रहा है, which gives you a very psychologically balance. Okay,
And that's the most important thing that I really wanted to put it out to you. So we have learned how to assess risk before putting on a trade. We have learned how to manage the risk. Emotional risk is the most important thing, and diversification always helps. I remember Warren Buffett has said this: "Ke have a concentration. Diversification is a reason for the ignorance, but not everybody says, and what the richest people in the world does. We have to do it. You have to find your own niche and trade it. Okay." And I believe the diversification of the strategy, diversification of the asset class, diversification of the mindset of the strategies, or the core principle of the strategies will is very helpful to me to stay away from the drawdown. So yeah, if you have any questions, or you are facing any issues, or you're managing the risk, stop loss jumping or anything, just tag me or 5%, then we'll happy to answer, or we'll take those questions in the next session as well. So Right. yeah, with this, Anshul, I know it's pretty late for you. I'm in New York time, but thanks for guys for that. That's all great. I mean, इतना informative session था जो हम बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए. So I mean definitely आप जो strategies भी सिखाते हैं उसके साथ साथ important भी है कि risk कैसे manage करें. And I'm sure हमारे viewers ने आज काफी सीखा है इस session से. Guys, like Vishal sir, आपके कोई भी questions or comments हो, do let us know in the comment box. ये session हमारे YouTube की playlist Masterclass with Vishal Mehta में रहेगा. So please do watch it and review all the previous sessions too. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया then do like, share, subscribe to our YouTube channel and don't forget to hit the bell icon for notifications. विशाल और मैं in fact आपको मिलेंगे जल्द ही and okay, take care till then. See you soon. Bye. Thank you. Bye bye.